Hello everyone, and I hope and I know you all are waiting for the videos. So for your kind help, and I just wish that you should excel in your exams. So here I am with another video. This is going to cover the research methods. That is the fifth paper. Some of you have must have opted for dissertation, और उन्होंने तो अपना डिसर्टेशन ही करना है जिसकी ग्रेडिंग है. एंड ऑल दो स्टूडेंट्स हु हैव नॉट बीन गिवन दिस ऑप्शन, या आप प्राइवेट कैंडिडेट हो तो आपको फिफ्थ पेपर अटेम्प्ट करना है 100 मार्क्स का, जो है रिसर्च मेथड्स पे, और यू कैन इन शॉर्ट से रिसर्च मेथोडोलॉजी. सो दिस इज वेरी हेल्पफुल इन इवन इन परस्यूइंग योर पीएचडी इन फ्यूचर. काफी कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. तो फर्स्ट यूनिट में दो टॉपिक्स हैं. One topic is like this research methods basis, and the other one is research ethics. So this is comparatively easy. Topic B जो है unit 1 का. So that's what I am going to discuss now here in this video. So this is research ethics. Right? So what are research ethics? Before we come down to research and its ethics, it is important to know what are research ethics. So ethics, or the moral values of honesty, integrity and sincerity, they play a very important role. तो ethics का मतलब है आपके moral values. अगर आप डॉक्टर हैं और आप किसी पेशेंट को गलत मेडिसिन दे रहे हैं, तो मतलब आप ethics को वायलेट कर रहे हो. अगर आप एक सन, डॉटर, बच्चे हो किसी के, अगर आप अपने पेरेंट्स को चीट कर रहे हो तो आप एथिक्स के एंटी जा रहे हो. अगर आप पेपर में अनफेयर मींस यूज कर रहे हो तो आप एथिक्स को फॉलो नहीं कर रहे हो. तो रिसर्च एथिक्स का मतलब वो एथिक्स, वो मॉरल वैल्यूज जो आपने रिसर्च में कवर करनी है, रिसर्च में ऑब्जर्व करनी है. सो इफ एथिक्स आर पर्सनल रूल्स फॉर बिहेवियर इन लाइफ, research ethics are honest ways to carry out your research. So in simple words, research ethics are linked with truth, honesty, fairness and equity. So एक example देख लीजिए. A renowned scholar David B. Resnick has rightly said about ethics as norms for conduct that distinguish between acceptable and unacceptable behavior. तो acceptable और unacceptable behavior का जो difference है वो norms. Ethics वो हैं rules हैं, norms मतलब rules हैं. तो most importantly हमारे जो research ethics के objectives हैं वो क्या होने चाहिए. सबसे पहले to protect human participants. रिसर्च के एथिक्स में आता है कि अगर ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स इंक्लूडेड हैं आपकी रिसर्च में तो उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए. दे शुड बी प्रोटेक्टेड. आपकी जो रिसर्च है जो कंडक्ट करनी है आपने, दैट शुड बी इन द बेस्ट ऑफ एवरीबडीज इंटरेस्ट. एवरीबडीज इंटरेस्ट. ये नहीं है कि मेरी रिसर्च मुझे तो फायदा दे रही है लेकिन 4 बंदों को उसका नुकसान हो रहा है. ये नहीं होना चाहिए. Thirdly, to examine activities involved in research projects for their ethical soundness. तो अगर आप कोई साइंटिफिक रिसर्च भी कर रहे हो और आपने एनिमल्स पे भी अगर कुछ एक्सपेरिमेंट करना है तो मेक श्योर दे शुड नॉट बी हर्ट, दे शुड नॉट बी एनी डैमेज टू देयर बॉडी और देयर लिम्स. तो बहुत ध्यान रखना है. तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारी रिसर्च एथिक्स के. Now after research objectives, अब ethics क्या हैं? Let's have a look at them in detail. So research ethics are very significant. Everybody knows it is very important to have research ethics. If we tell a lie, we can lose someone's trust and undermine our own integrity. तो रिसर्च एथिक्स, अगर एक छोटा सा झूठ बोलने से आपके कुछ नुकसान हो सकता है तो रिसर्च एथिक्स को ना फॉलो करने से तो बहुत कुछ हो जाएगा. नाउ व्हाट आर दोज रूल्स, रेगुलेशंस एंड एथिक्स व्हिच आर टू बी फॉलोड? फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑनेस्टी. अ रिसर्चर शुड ऑनेस्टली रिपोर्ट डाटा. तो एक जो रिसर्चर है उसको ऑनेस्टली काम करना है. जैसे यू मस्ट हैव बीन लुकिंग इनटू द न्यूज, यू मस्ट बी रीडिंग दैट हाउ hospital staff of Cooper Hospital is now coming up and he's speaking to the media that how ethics were not followed. That's the example of how ethics were not followed when the autopsy of postmortem of late actor Sushant Singh Rajput was to be conducted live, videographed. It should have been videographed. It was not done, right? Only pictures were clicked and the actually sound report was not given. So I don't know how true and how false it is, but
this is just an example how research ethics can be they can be sidelined, they can be neglected, but that's not at all good for anyone. Then objectivity, one has to be very objective. आपको personal नहीं होना, अपनी personal biasness को नहीं लाना इसमें. Integrity, it's the honesty that you do something and you do it with your full potential. आप कुछ गलत means नहीं use कर रहे हैं, तो sincerity is required. It's sincerity, honesty, integrity, one and the same thing. Then respect for intellectual property. Make sure you are not cheating anybody's material. अगर आप रिसर्च कर रहे हो, copyrighted है, it's okay. For example, even one day in one video I used, it was a recorded song was being played and I just recorded it. So copyright claim came up. Right? So we should be very careful about, if I am writing something, if I'm doing something, I should respect people's intellectual property. I should give them credit that yes, I often say in the previous video I said it, that this picture was taken from Google. So we need to be honest. Then plagiarism, that has to be avoided. Plagiarism नहीं होना चाहिए. तो stealing somebody's property, और अगर मैंने एक research paper लिखा और next research paper में मैंने अपने research paper का material use कर लिया, that would be self plagiarism. वो भी use नहीं करना होता. Then confidentiality and social responsibility. भाई अगर आप research में हैं, if I am into research, if you are into research, we need to respect social, scenario. We are responsible for certain things, so we have to maintain social responsibility as well. So protection of confidential and secretive material is very important. मेरे देश का डेटा मैं रिसर्च के नाम पे लीक नहीं कर सकती, राइट? नोबडी कैन डू इट. तो जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, अगर आप किसी ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हो वेयर पीपल आर नॉट एबल, दे आर नॉट विलिंग इवन टू कम आउट विद देयर आइडेंटिटीज, we need to maintain it. अगर हमें किसी ने कोई खुफिया इंफॉर्मेशन दे दी है, या किसी ने, मान लीजिए कोई रिसर्च कंडक्ट हो रही है रेड लाइट एरिया जो है ऑफ मुंबई, तो इफ somebody has come up with their opinion, we should respect it. हमें उनकी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना. इसके बाद 2 एस्पेक्ट्स हैं रिसर्च इशू, जो रिसर्च इश्यूज या रिसर्च एथिक्स हैं इनके. एक तो रिसर्चर्स वैल्यूज अबाउट ऑनेस्टी, फ्रैंकनेस एंड इंटेग्रिटी. दूसरा है रिसर्चर का ट्रीटमेंट ऑफ अदर्स. अपना भी 2 इश्यूज आते हैं, एक अपने एथिक्स देखने अपने लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, एक देखने आपने जिनके साथ आप डील करते हो उनके लेवल पे. एंड देन यू हैव रोल ऑफ रिसर्च कमिटीज. अब रिसर्च कमिटी का क्या रोल है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू कवर. You may have a separate question on that too. So it is indeed for everybody's interest and welfare that every individual should promote research ethics. This is important. तो इसमें research committees जो हैं, इनका review जो है, ethic research committee reviews the proposed studies with human participation to ensure that research should conform. ये जो word है conform to, it means it should belong to international locally accepted ethical guidelines. तो आपकी जो भी रूल्स रेगुलेशन है, जहां भी आप रिसर्च अपनी कंडक्ट कर रहे हो, वो आपने सारे फॉलो करने हैं. यू हैव टू ओबे. देन these research committees, they have the power to monitor studies, take part in follow-up actions and to supervise the end of every research. तो कमिटी ने काफी रोल्स जो हैं वो प्ले करने हैं. The committees have the authority to approve, reject or stop studies if the committee members find that the researchers are using unfair means. तो रिसर्च कमेटी के हाथ में काफी सारी पावर्स जो हैं वो होती हैं. Main responsibility of research ethics committee is to protect the potential participants in the research, and it also takes into account that there shouldn't be any risk to the people involved in it. So overall, the ultimate goal of every ethic committee or research ethic committee is in research is to promote high ethical standards in research. तो high ethical standards को maintain करना जो research committees हैं इनका काम है.
As far as structure of ethical committee is concerned, these can be local, national, international, with the motive to evaluate the process and materials that are used in research. So evaluate, नेगेटिव पॉजिटिव्स दोनों बताने हैं, अच्छा बुरा सब बताना है इन्होंने. फॉर एग्जाम्पल, पंजाब यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ब्रिटिश एजुकेशनल रिसर्च एसोसिएशन follow their own code of conduct that the researchers have to follow. तो अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर कर रहे हो, now there are certain guidelines. चाहे आप सिलेबाई को भी की बात कर लो, तो कुछ गाइडलाइंस हैं हर यूनिवर्सिटी की जिसके अकॉर्डिंगली हमें पढ़ना होता है उसमें. तो रिसर्च के लिए भी कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं जो हमें हर यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंगली फॉलो करने होते हैं. The research ethic committees are very active against plagiarism. तो plagiarism तो nobody tolerates. ये होना ही नहीं चाहिए. इसके साथ तो काम नहीं बनेगा अगर ये कर रहे हो आप. तो plagiarism है क्या? यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये भी देखना होगा. What is plagiarism? I hope I would wind up this entire unit in short time. So in simple words, plagiarism क्या है? Using the thoughts, ideas and works of others without acknowledging their source. तो अगर हम source acknowledge नहीं कर रहे हैं, हम नहीं बता रहे हैं हमने ये कहाँ से material लिया है, that is plagiarism. Even if you paraphrase into your own words, it is unethical. Equally criminal and serious is claiming sole authorship of work which is in fact the result of collaboration. तो इसके लिए ये जो वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, राइट, घोस्टिंग बोलते हैं इसको, कि आपने काम किसी से करवा लिया, आपका मेन ऑथर कोई और था, यू वर द को ऑथर, और जब आई बात पब्लिकेशन की तो आपने उनके साथ धोखाधड़ी कर दी अपने मेन ऑथर के साथ और आपने इसको अपने नाम पे छपवा लिया. तो दैट इज अगेन plagiarism. It's unethical. While researching, a researcher cannot rely on his own ideas, concepts. ये true है. अब अगर मुझे भी रिसर्च करना है, भाई मुझे एक बड़ा अच्छा भारी भरकम थीसिस लिखना है, how would I be able to write the entire thing on my own? I need to, read something extensively. और जब मैं किसी को read करूंगी तो automatically it is going to be in my mind once I'll sit and start writing. तो दैट्स ऑब्वियस, हमें पढ़ना भी होता है, हमें देखना होता है इस टॉपिक पे हमसे पहले कितने लोग इस पे काम कर चुके हैं एंड व्हाट आर द रिसर्च गैप्स. तो रिसर्च गैप्स को पकड़ के ही हमने उनके ऊपर वर्क करना होता है कि दिस थिंग हैज नॉट बीन इन्वेस्टिगेटेड अर्लियर एंड नाउ आई शैल डू इट. तो ये करना ही है. A researcher has to read, evaluate and quote the material relevant to his research. But then how to avoid plagiarism? तो ये plagiarism कैसे करना है उसने, that's important to learn कि करना कैसे है. A researcher can avoid the accusation of plagiarism by acknowledging the source. तो ultimately करना क्या है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ source को वो कर रहे हो, acknowledge कर रहे हो, you are done with. और वो कहाँ करना है, in the form of in-text citations and bibliography. ये करके आप you can easily do it. तो आप अपनी टेक्स्ट में दे सकते हैं. टेक्स्ट के अंदर अगर दे दिया आपने विद इन योर टेक्स्ट, वो इन टेक्स्ट साइटेशंस हो गई. और ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है, जहां लाइन कोड करी वहां इन टेक्स्ट साइटेशन दे दो. तो ये एक हो गया. दूसरा, आप एंड में जाके बिब्लियोग्राफी में वो जरूर ऐड कर दें, तो देयर वोंट बी एनी दिस criminal offense of plagiarism in your work. So this is the simplest way to tackle the evil of copying. Just give credit to the original think tank. जिसने original idea सोचा उसको आप credit दे दो, बात खत्म. And you are free from the danger of copying or cheating. In order to cite sources, various methods of references are used. Sometimes a researcher quotes, adds the following. तो कैसे करना है ये? Avoid कैसे करना है आपने? Yes, so what are the different methods how to avoid plagiarism? क्या क्या करना है? So cite भी अगर आपने करने हैं, so in order to cite sources, various methods of references are used. Sometimes researcher quotes and adds the following. Sometimes you add direct quotation from the original text. कई बार क्या करते हो, half quote and half paraphrase the statement.
कई बार fully paraphrased material with 2-3 phrases from the original. तो ये 3 तरीके हैं कोट करने के. पूरा स्टेटमेंट उठाना, हाफ स्टेटमेंट इन्वर्टेड कॉमास कोट्स में रखना और बाकी का पैराफ्रेज्ड, और पूरे का पूरा मटेरियल पैराफ्रेज्ड विद जस्ट 2-3 वर्ड्स और फ्रेजेस फ्रॉम द ओरिजिनल टेक्स्ट. तो ये तरीके हैं आपके हाउ टू साइट सम सोर्स. Then in literature we have MLA 8th edition, which means Modern Language Association edition, that helps in citing a wide variety of sources such as books, journals, conferences, talks, interviews, images, audios, etc. तो कुछ भी quote करना है, we follow MLA 8th nowadays. Research is not about writing, but about responsibility towards fellow researchers, respondents, the public, and the academic community. Accurate descriptions in every aspect makes the work credible. अगर work को credible करना है, तो it is important to have, indeed, to have every accurate possible description in your research. Then regarding the use of language in research, what we can say, language is definitely of great importance. It is only language through which we are going to express ourselves. We are going to express our research. So, but you have to be very careful that meaning should be always, clear. You should not demean any gender, race, caste, color, creed, or persons with your language. So one should use gender neutral language too. तो कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए आपकी लैंग्वेज में कि आप बायस हो या आप किसी को हर्ट कर रहे हो. So introduction of any research work should clarify to the examiner the theoretical perspective. तो आप जैसे भी लिख रहे हो, आपकी लिखावट अगर किसी को समझ नहीं आएगी भाई, तभी कोई फायदा नहीं है. Language helps in clearing the ground rules and assumptions. So here even it's very important to have एक तो discriminative, prejudice, intolerance, favoritism, इनके खिलाफ थोड़ा ठीक रहना है. दूसरा, आपकी लैंग्वेज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, आपकी लैंग्वेज में कहीं भी बायसनेस नहीं आनी चाहिए. एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू हैव अ गुड कमांड ओवर योर लैंग्वेज. You need to have sound grammatical base. Without grammar, definitely you won't land anywhere. So you need to have good writing skills. You need to have good command over the tenses, sentence structure. All these things are important, be it a scientific research or a like research related to literature. So आपको अपनी लैंग्वेज पे बहुत ध्यान रखना है, आपको वो लैंग्वेज बहुत सही रखनी है. तो बहुत अच्छे तरीके से किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए नहीं लिखना, आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को इन्फ्लुएंस नहीं करना, आपने अपनी निरपक्ष जो रिसर्च है उसको कंडक्ट करना है. So ethical considerations should be followed if a researcher is dealing with human beings conducting a survey. So this is just a conclusion where everything is repeated. So you should respect privacy of others, and you should not play upon the reputation or fame of others for your own selfish. Here one word is missing. Pay attention. Selfish motive. तो आपने अपने किसी सेल्फिश मोटिव के लिए किसी और का कोई नुकसान नहीं करना, किसी को यूज नहीं करना. There shouldn't be any bullying or victimization. ये नहीं होना चाहिए. While publishing a research paper, one has to be careful about not using one's own material before publication of the final thesis, because this would be counted as self-plagiarism. So on the whole, it can be said that research ethics should be followed in research projects at all costs. Without following ethics, no project is fair, biased, and successful. So nothing is successful if we do not follow rules, norms, and regulations of conduct. So that is all about first unit, that is research ethics. With this, you are done with first unit, part 2. Right? So all the very best, and see you with the next video soon.